last class we have done input, test signals, transfer function, open loop and closed loop system. Okay. In today's class, we'll go for methods to find transfer function. It is first method is from mathematical relation. Second method is from impulse response. They will go for block diagram reduction and then for signal flow graph. ये सभी ट्रांसफर फंक्शन निकालने के मेथड सी हैं. एक एक करके इनको देखते हैं. फर्स्ट वन इज transfer function from mathematical relation. तो नोट कर लिया आप लोग? ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम मैथमेटिकल रिलेशन. इसके लिए आपको मैथमेटिकल मॉडल चाहिए होगा कि आउटपुट और इनपुट कैसे रिलेटेड. एग्जांपल, सपोज इनपुट एंड output of a system is related as 3 d2 by dt square c of t plus 7 d2 by d by dt of c of t plus 2 c of t is equal to d3 या d2 पे ही रखिए d2 by d2 square rt plus d by dt of 2 d by dt of r of t plus 3 rt. इनपुट और आउटपुट इस तरह से रिलेटेड है. कैसे रिलेट करेंगे आपको इसको, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे. अगर आपके पास एनी हाउ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, डायरेक्ट इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए. टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of equation. Assuming initial condition 0, d2 by dt square ct, the Laplace transform will be 3 into s square c of s plus 7s c of s plus 2 c of s. C of t का Laplace transform c of s. This d2 r by dt square, again s square r of s
plus 2s r of s plus 3 into r of s. यहां से सी एस और वहां से आर एस कॉमन है क्या? सी ऑफ एस कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या? 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2. यहाँ पे आर ऑफ एस कॉमन लिया, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट cs by rs. दिस इज cs, दिस इज rs. rs को इधर भेजिए, उसको इधर भेजेंगे आप. एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 अपॉन 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2. It is the most simplest way to calculate transfer function. अगर आपको इक्वेशन पता है यानी टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन किसमें भी, तो ट्रांसफर फंक्शन निकालना सबसे सिंपल है आपके. ठीक, एक खुद से करेंगे आप लोग. हो गया? इसमें थोड़ा सा हम लोग जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं वो टाइम डिले है, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है, आप कर सकते हैं इसको. दिस इज 3r of t minus 1. ट्रांसफर फंक्शन बताइए. सब कुछ सेम रखा है. आप लोग करेंगे, मैं करूं? इतना टाइम बहुत है. अगेन टेकिंग Laplace transform. This is 3s square c of s plus 7s c of s plus 2 c of s is equal to, this is s square r of s plus 2 s r of s plus 3 r of s into e to the power minus s. Again r of s is common. Therefore, c of s upon r of s is equal to s square plus 2s plus 3 e to the power minus s upon 3s square plus 7s plus 2. इससे एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि if there is exponential function in transfer function, exponent आ रहा है, so there will be time delay equation.
इनके रिलेशन में कहीं ना कहीं टाइम डिले है, तभी ट्रांसफर फंक्शन में ये एक्सपोनेंशियल e टू द पावर s समथिंग कुछ आएगा। नोट लिखिए। It can be concluded that if there is time delay in equation relating input and output, it can be concluded that if there is time delay in equation relating input and output, there will be exponential functions of s. There will be exponential functions of s in transfer function. e to the power s और किसी तरीके से नहीं आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं टाइम डिले है बीच में। इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली सेम टाइम पे कनेक्टेड नहीं है। सेकेंड इज impulse response. Now, ये response नेटवर्क थ्योरी में भी ट्रांजिट में भी काफी कर चुके हैं आप। Impulse response का मतलब क्या होता है? Output of the system when there is an impulse unit given to it. स्टेटमेंट लिख लीजिए इसको। Impulse response of the system is impulse response of the system is the output of it when the input is unit impulse. आउटपुट कितना मिलेगा अगर इनपुट आपका यूनिट इंपल्स है? That is, input R of t is what? Del t. Therefore, R of s कितना हो जाएगा? 1. Unit impulse का Laplace transform is 1, and then if the transfer function or gain of the system is g of s. हम मान लें कि gain of the system and transfer function both are same. एक ही ब्लॉक है, इसको आप g से दिखा सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन और gain of the system सेम है, then output of the system can be written as, क्या लिख सकते हैं आप? C of s is equal to g of s into r of s by definition of transfer function. C by r g होता है या ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो आउटपुट को आप C into r लिख सकते हैं। Since r of s is equal to 1, therefore C of s is equal to g of s. हो सकते हैं ऐसा? What is g of s? ट्रांसफर फंक्शन जो कि सिस्टम का प्रॉपर्टी है। What is c of s? It is output. इनपुट से चेंज होता है, लेकिन आपने इनपुट अगर इंपल्स दे दिया, आउटपुट ऑफ द सिस्टम, आउटपुट सिस्टम का जो आउटपुट है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी डायरेक्टली द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम। लिखिए इसमें
This equation states that this equation states that transfer function of the system is directly equal to transfer function of the system is directly equal to Laplace transform of input, Laplace transform of output is directly equal to Laplace transform of output when input is impulse type. When input is impulse type. Next, second point. Also, second point, also the impulse response. Also, the impulse response of the system. Impulse response of the system can be directly calculated. Can be directly calculated taking inverse Laplace of the transfer function. तो अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, या आपसे पूछा जाता है कि इंपल्स इनपुट पे रिस्पांस क्या मिलेगा, तो ट्रांसफर फंक्शन किसका, ट्रांसफर फंक्शन का डायरेक्ट इनवर्स लाप्लास ले लीजिए. क्लियर? क्वेश्चन लिखिए. If the impulse response of a system, if the impulse response of a system is IR is equal to 2 e to the power minus 3t plus e to the power minus 2t. The impulse response of the system is 2 e to the power minus 3t plus e to the power minus 2t. Find its transfer function. कोशिश करेंगे आप? By definition, transfer function T of s या G of s, अभी गेन लेके चल रहे थे तो G of s ही रहने दीजिए. It is equal to Laplace transform of impulse response. ये बोला है response का मतलब output होता है ना, ठीक. Output का Laplace transform ले लीजिए. It is Laplace transform of 2 e to the power minus 3t plus e to the power minus 2t. This 2 e to the power minus 3t Laplace transform will be e to the power minus 3t is f of s plus a. यहाँ पे 1 है या 2 है, it is s plus 3 Laplace transform लेने के बाद plus e to the power minus 2t is s plus 2. ऐड कर दीजिए इसको, नीचे s plus 3 s plus 2 2 times 2s plus 4 plus s plus 3 G of s. Again, our transfer function is 3s plus 7 upon s plus 3 s plus 2. आप चाहे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, दोनों पे की फॉर्म में लगा के, जरूरत नहीं है, इसको भी काफी है. दिस इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम.
ठीक, तो अगर ट्रांसफर फंक्शन पूछा है तो इम्पल्स रिस्पांस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है, और अगर इम्पल्स रिस्पांस पूछे तो ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ले लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, the system has transfer function of a system has transfer function of system has transfer function of P of s 4 upon s plus 2 s plus 3. Find its impulse response. Find its impulse response. जिसमें इंजीनियरिंग कंसेप्ट कोई नहीं है, कोर मैथमेटिक्स क्वेश्चन है कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है कि चलिए बोर्ड पे देखिए अगेन, by definition impulse response will be equal to Laplace inverse of transfer function, Laplace inverse of 4 upon s plus 2 s plus 3. अगेन मल्टीपल टर्म्स, अब डायरेक्ट इनवर्स लाप्लास नहीं ले सकते, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ a upon s plus 2 plus b upon s plus 3। अब आप कंपेयर करें तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, पूरा लिखूं अगर मैं, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s plus 2 s plus 3। This a plus b into s plus 3a plus 2b है कि नहीं? By comparing a plus b is equal to 0 and 3a plus 2b is equal to 4। यहां से क्या मिला? a is equal to minus b और b is equal to minus, पुट कर दीजिए। 3a minus 2a is equal to 4। a is equal to 4, therefore b is equal to minus 4। So we have to take Laplace inverse of 4 upon s plus 2 minus 4 upon s plus 3। फोर कॉमन है, बाहर ले लें। 1 upon s plus 2 inverse Laplace is e to the power minus 2t minus e to the power minus 3t। बेसिक इनपुट आउटपुट रिलेशन से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं।
जी क्या आप लिख सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने गलत लिखा था, यहाँ -g प्लस लिखाया है। मतलब ये पूरा प्रोसेस माइंड में कर लिया आपने। हर बार नहीं आएगा वैसे, इस बार भी आपका गलत ही आया है। ये प्लस और माइनस छोटा गलती नहीं है, रिजल्ट सेम ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। क्वेश्चन इज impulse response of a system is equal to e to the power minus 2t. What will be its step response? अगर इंपल्स रिस्पॉन्स इतना है, स्टेप रिस्पॉन्स कितना हो? अब इसके दो मेथड्स हैं। या तो आप इंपल्स रिस्पॉन्स से ट्रांसफर फंक्शन निकालिए। ट्रांसफर फंक्शन के बाद आपको इनपुट मालूम है, ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट इज आउटपुट, आउटपुट का फिर इनवर्स लाप्लास लीजिए। एस डोमेन से टाइम डोमेन में आइए, या फिर एक और तरीका है डायरेक्टली इंटीग्रेट करके, लेकिन आप पहले फर्स्ट मेथड को फॉलो करिए, देखिए क्या आ रहा है। इंपल्स रिस्पॉन्स मालूम है ना, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। कोशिश करिए। ट्रांसफर फंक्शन is equal to t of s is equal to Laplace transform of impulse response is equal to Laplace transform of e to the power minus 2t. It is what? 1 upon s plus 2. No. For step response, input r of s is 1 upon s, and transfer function is 1 upon s plus 2. Therefore, c of s is equal to 1 upon s into s plus 2. Transfer function into input again. Therefore, response, step response will be Laplace inverse of c of s. c of s response है Laplace डोमेन में, उसको आप टाइम डोमेन में लेके आइए। a upon s plus b upon s plus 2, इसका इनवर्स लाप्लास लेना है। By partial fraction, a will be 1 by 2 and b equal to minus 1 by 2. फ्रैक्शन करके देखिए। मिल रहा है? So, for inverse Laplace,
First step response, we will have C of t is equal to Laplace inverse of 1 by 2 common ले लूं मैं 1 upon s plus 1 upon s plus 2 minus 1 upon s plus 2 1 by 2 1 by s inverse Laplace is 1 minus e to the power minus 2t क्या यूटी 1 ही होता है ना? नहीं समझे मैं। कंट्रोल सिस्टम हम हमेशा टी आफ्टर टी इक्वल टू 0 ही लेते हैं। नॉन कॉजल सिस्टम का भी कंट्रोल चेक नहीं कर सकते आप। हमने जितने भी फॉर्मूले लिए सब में इनिशियल कंडीशन 0 ही लिया था। इसका एक और मेथड है। हमको इम्पल्स रिस्पांस पता है ना, इट इज e to the power minus 2t, right? Then step response, suppose कर रहे हैं c of t is equal to from 0 to t impulse response dt। अगर इम्पल्स रिस्पांस का इंटीग्रेशन करें तो आपको डायरेक्ट स्टेप रिस्पांस मिल सकता है, is equal to integral 0 to t, it is impulse response is e to the power minus 2t dt। What is integration e to the power a? e to the power x का इंटीग्रेशन कितना होता है? e to the power x by a। So this integral is e to the power minus 2t upon minus 2 from 0 to t। माइनस साइन बाहर कर लें, माइनस e to the power minus 2t upon 2 from 0 to t। अगेन पहले अपर लिमिट रखते कि लोअर लिमिट? अपर लिमिट ना, इज इक्वल टू t की जगह t पुट करना है minus 2t upon 2 माइनस e to the power 0 upon 2, बाहर एक माइनस साइन और, what is e to the power 0? 1 minus e to the power minus 2t by 2 minus 1 by 2, 1 by 2 कॉमन ले लूं, माइनस माइनस प्लस 1 minus e to the power minus 2। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इससे। आगे चलें तो फर्दर आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन यस, पहला कंक्लूजन, अगर आपको स्टेप रेस्पॉन्स चाहिए it is c of t is equal to integral 0 to t impulse response
dt. Similarly, ramp response C of t will be equal to integral 0 to t step response dt. Similarly, parabolic response this C of t will be integral 0 to t dt. जैसे मैंने स्टेप रेस्पॉन्स दे करके इंपल्स रेस्पॉन्स दे करके स्टेप रेस्पॉन्स की वैल्यू पूछी ना, मैं स्टेप रेस्पॉन्स दे के इंपल्स रेस्पॉन्स पूछ सकता हूं. If by definition if a step response is integral of ramp impulse response will be differentiation of step response. ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन से मिला है. Therefore similarly पैराबोलिक से ऊपर जाएंगे नहीं आप. रैम्प response is equal to d by dt of parabolic response. Response is equal to d by dt of ramp response and impulse response d by dt of step response. अगेन फिर ये जरूरी नहीं है कि आपको केवल इंपल्स और स्टेप और यही सब इनपुट मिले. इनपुट चेंज भी हो सकता है. तो आपका जो फर्स्ट और प्राइमरी मेथड है उसको आपको याद रखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. The impulse response of a system is e to the power 2t. What will be the response of system if input is e to the power 3t? ट्राई करेंगे आप लोग. 2 मिनट ट्राई करिए इसको. आप लोग अगेन by definition transfer function T of S is Laplace of impulse response. Transfer function T of S is Laplace of e to the power 2t. Laplace transform of e to the power 2t is 1 upon s minus 2. Transfer function is 1 upon s minus 2 and input R of S is Laplace transform of e to the power 3t. टाइम डोमेन में है ना. R of S will be equal to 1 upon s minus 3.
e to the power 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 upon s minus 3. Therefore, C of s can be written as T of s into R of s. C of s is 1 upon s minus 2, s minus 3. देख सकते हैं? By definition, response in time domain C of t will be equal to Laplace inverse of 1 upon s minus 2, s minus 3. Again multiple terms. पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा. C of t is Laplace inverse of a upon s minus 2 plus b upon s minus 3. दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए. ये और ये इक्वल है. a और b की वैल्यू बताइए. a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1. ठीक. C of t will be Laplace inverse of -1 upon s minus 2 plus 1 upon s minus 3. इनवर्स लाप्लास बताइए. Therefore, C of t is equal to 1 upon s minus 2. Inverse Laplace will be e to the power 2t minus e to the power 2t plus e to the power 3t. The answer. अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालिए. सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे माइनस माइनस लगा रहा हूँ बस. The impulse response is e to the power minus 2t. Okay. And the input is e to the power minus 3t. क्या आउटपुट देगा? पांच मिनट आपके पास. कितना? e to the power minus 2t ठीक. दो मेथड से, एक तो आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन से निकलता है या तो इंपल्स रिस्पांस से निकालिए. इंपल्स रिस्पांस से बाकी सारा और भी रिस्पांस आप निकाल सकते हैं अगर अलग अलग इनपुट दिया है तो. ये दो टॉपिक आपका कवर हो गया है. नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम. लास्ट क्लास में हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था थर्मल पावर प्लांट. ठीक. इसमें देखा था हमने एक कंट्रोल सिस्टम कैसा होता है. उसमें केवल ऐसा नहीं कि एक ही सिस्टम रहता है. वाटर साइकिल अलग थी, एयर साइकिल अलग था, कोल ऐश साइकिल अलग था.
ठीक, तो बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम मिल करके भी एक बड़ा सा सिस्टम बनाते हैं। तो आप अलग अलग ब्लॉक्स को कनेक्ट करके एक कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं। हालांकि ओवरऑल गेन पूरे ब्लॉक्स को मिला करके एक कंबाइन ही होता है, जिसको आप नेट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम कहते हैं। अगर बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं तो उनको रिड्यूस कैसे करेंगे, उसमें 10 रूल हैं। उन 10 रूल्स को फॉलो करके आप एक बहुत से बड़े, कितना भी बड़ा ब्लॉक डायग्राम हो, उसको एक सिंगल ब्लॉक में रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट, in most of the practical cases, controlled system, in most of the practical cases, controlled system is made up of many blocks which can operate independently, system. For example, in thermal power plant, for example, हमने थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है ना, इसलिए उसको एक एग्जांपल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन थर्मल पावर प्लांट where there are 3 cycles, that is air cycle, water cycle and coal ash cycle. Air cycle, water cycle and coal ash, that ash cycle. ash मतलब राख, coal ash cycle, which are connected by many blocks, but still the primary input is heat energy. The primary input is heat energy, and the final output is electrical energy. इसमें बहुत सारे साइकिल है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, लेकिन हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्टीम कोई भी पावर प्लांट क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो हमारा इनिशियल इनपुट क्या है, हीट एनर्जी है, और फाइनल आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, हमको इनपुट मालूम, आउटपुट मालूम है, आउटपुट अपॉन इनपुट इन लैप्लास डोमेन हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, वो एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन पूरे ब्लॉक डायग्राम का रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, पहला चीज करके लिखिए, since input and output are known, we can find out transfer function of overall system. Transfer function of overall system which represent resultant of all the blocks of system, Next paragraph. एक तो ये तरीका है कि फाइनल इनपुट और फाइनल आउटपुट आपको मालूम, तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात हुई। थ्योरेटिकली मैं अगर आपको एक सिस्टम दे दूं, बहुत सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उसको एक सिंगल ब्लॉक में कैसे रिड्यूस करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आप सिंगल फ्लो ग्राफ यूज करिए, या फिर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज करिए। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। इफ the connections of block are provided theoretically, connection of blocks are provided theoretically
are provided theoretically, comma, they can also be reduced. They can also be reduced to single block. They can also be reduced to single block with the method called block diagram reduction technique. With the method called block diagram reduction technique. यही आपका हेडिंग है नेक्स्ट टॉपिक. इस मेथड में या रिडक्शन में आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिड्यूस करते हैं. उसके लिए टोटल हमारे पास 10 रूल्स हैं. ठीक, देखिए, देयर आर टोटल 10 rules which can be used to reduce the number of blocks. There are total 10 rules which can be used to reduce the number of blocks in a system. नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिड्यूस करने के लिए टोटल 10 रूल हैं हमारे पास. फर्स्ट रूल इज कास्केड कनेक्शन. सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें 2 ब्लॉक्स हैं. गेन G1, this is G2, फाइनल आउटपुट इनपुट. इनपुट यहां से दिया आपने आर ऑफ एस. आउटपुट कितना मिलेगा? दिस इनटू दिस. ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट होता है ना. यहाँ पे मिलेगा आपको G1 इंटू आर. अब इसमें G2 और मल्टीप्लाई होगा G2 G1 आर. ठीक, तो आपने 2 अलग अलग ब्लॉक क्यों लगा रखे हैं? इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय a single block G1 G2. तो अगर कास्केड में ब्लॉक्स हैं तो रिजल्टेंट में दोनों गेन मल्टीप्लाई हो जाता है. स्टेटमेंट लिख लीजिए इसका. If 2 blocks are in cascade connection, 2 blocks are in cascade connection, comma, their gain can be multiplied to reduce into a single block. Their gain can be multiplied to reduce into a single block. Similarly, parallel connection. We have one block, gain G1, इनपुट RS. एक और ब्लॉक पैरेलल में लगा दिया G2, जो इनपुट इसके पास वो इनके पास R of S.
यहाँ पे समिंग पॉइंट है, दोनों ऐड हो रहे हैं, सी ऑफ एस। यहां से कितना मिलेगा, G1R, यहां से G2R, दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, और C इज इक्वल टू G1 प्लस G2 इंटू R। C2 इज इक्वल टू समथिंग इंटू R। इसको आप ट्रांसफर फंक्शन बोल सकते हैं क्या? तो अगर चाहें तो आप दो ब्लॉक ऐसे पैरेलल में अगर लगा रखा है ना, इसको ऐड कर दीजिए। आगे चले। तीसरा रूल है मूविंग टेक ऑफ ब्लॉक। टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ब्लॉक। तो मेरे पास एक ब्लॉक है जी, यहां से इनपुट दिया आपने R, यहां से आउटपुट ले रहे C, और एक टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है C। फाइनल इनपुट और फाइनल आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए कभी। इस टेक ऑफ पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है अहेड ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे लेके आना। ठीक, तो अगर आप शिफ्ट करते हैं इधर, ये क्या था G, इधर था R, इधर है C, आपको यहाँ पे क्या चाहिए C, लेकिन आप यहां से लेंगे तो क्या मिलेगा R को C में कन्वर्ट करने के लिए एक और G लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आप टेक ऑफ पॉइंट को इधर लेके आते हैं तो एक और गेन यूज करना पड़ेगा। Fourth one is moving take off point after the gain। पहले इधर से इधर मूव किया, अब आफ्टर द गेन, पहले से बाद में मूव करेंगे। So we have gain, output C, gain G, input R, and we have a take off point जहां से आपको मिलेगा R। अगर आप इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर शिफ्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आउटपुट में चेंज नहीं होना चाहिए। C, दिस इज R, टेक ऑफ पॉइंट लिया आपने, लेकिन यहाँ आपको चाहिए क्या R, अभी क्या मिल रहा है C को R में कन्वर्ट करने के लिए 1/G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
मूविंग समिंग पॉइंट अहेड ऑफ ब्लॉक, बस एक ब्लॉक है, दिस इज G, इनपुट इज R, वी हैव अ समिंग पॉइंट प्लस C, यहाँ पे कोई और सिग्नल दे दिया R C हो गया ना, सपोज यहाँ पे Q सिग्नल दे दिया था, आउटपुट को हम लिख सकते हैं क्या, इट इज R G प्लस Q। अब समिंग पॉइंट को आपको अहेड ऑफ ब्लॉक लेके आना है, फाइनल इनपुट और आउटपुट चेंज होना है। इधर लग गया, इधर गेन G, इधर बनेगा C, इधर है R। अब जो चेंज करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट Q दे दूं तो R प्लस Q में G से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज RG प्लस QG, लेकिन हमको G नहीं चाहिए, आपको यहाँ देना होगा 1/G और फिर इसको आप देंगे जो पहले था वही अभी भी रहेगा। आफ्टर ब्लॉक अभी हमारे पास समिंग पॉइंट यहाँ पे है, G, फाइनल आउटपुट C, R Q, आउटपुट इज RG प्लस QG। अगर आप उस पार लेके जाते हैं इसको तो इनपुट फाइनल R है, then we have G, then we have summing point, T must be RG plus QG। यहाँ से R दिया, मल्टीप्लाई होने के बाद RG यहाँ पे मिल गया, QG और चाहिए आपको है, लेकिन आपके पास Q में G से मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भेज दीजिए। अब टेक ऑफ पॉइंट इधर से उधर मूव करें ब्लॉक के आसपास, ये समिंग पॉइंट एक इधर से उधर मूव करें ब्लॉक के आसपास, एक ब्लॉक बढ़ जाता है। लेकिन इसका भी फिर भी यूज करते हैं ताकि हम सीरीज पैरेलल बना पाए। ये 6 बहुत है, पहले अभी इसको याद करिए। 4 और हैं, बाकी 4, एक तो सिंपल है समिंग पॉइंट इधर उधर मूव करना, बाकी 3 तो थोड़ा सा मूविंग है, मतलब डिफिकल्ट है। इंटरचेंज ऑफ समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। ठीक, कल की क्लास से पहले अगर हो सके तो आप जो ट्रांजिएंट और लाप्लास ट्रांसफॉर्म खासतौर से जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जो आज टोटल आज की क्लास है ना उसको भी एक बार देख लीजिएगा। शाम को रिकॉर्ड होके आपको एप्लीकेशन पे मिल भी जाएगा। ठीक, अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए इसको। हाँ जा सकते, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिए।